Prime Minister Narendra Modi interacts with the Gram Panchayats and Pani Samitis, village water and sanitation committees on Jal Jeevan Mission via video conferencing. Prime Minister launches the Jal Jeevan Mission app. Nation pays homage to the father of nation Mahatma Gandhi on his 152nd birth anniversary. President, Vice President and Prime Minister pay floral tributes to Gandhiji at Rajghat. Prime Minister says his noble principles are globally relevant and give strength to millions. Series of functions including Sarva Dharma Prarthana Sabha organized to mark the occasion. In other news, International Day of Non-Violence being observed across the globe to pay tributes to Mahatma Gandhi. United Nations Secretary General Antonio calls for peace, for building a better future for all. Nation remembers second Prime Minister of the country Lal Bahadur Shastri on his 118th birth anniversary. President, Vice President and Prime Minister pay floral tributes at Vijayaghat. Prime Minister says Shastriji's life is based on values and principles and will always remain a source of inspiration for the country. In an interview with a weekly magazine, Prime Minister Modi says government is actively focusing on preventive healthcare. Says Ayushman Bharat digital mission will enhance access to healthcare for the poor, boost innovation and make treatment seamless across geographies. And Indian Army deploys the first K9 Vajra regiment along the LAC with China. Deployed in the Ladakh sector, the self-propelled Howitzer guns can strike targets at around 50 kilometers and also capable of working in the high altitude areas. And world's largest Khadi national flag installed in Leh, 225 feet long and 150 feet wide. Tricolour inaugurated by Ladakh Lieutenant Governor R.K. Mathur, Army Chief General Manoj Mukund Nirvane also present on the occasion. Namaskar and welcome. You're watching DD India. I'm Sakal Bhatt and the top story at the SA. Prime Minister Narendra Modi interacted with Gram Panchayats and Pani Samitis, that is village water and sanitation committees on Jal Jeevan Mission today via video conferencing. Prime Minister also launched the Jal Jeevan Mission application for improving awareness among stakeholders and for greater transparency and accountability of schemes under the mission. Prime Minister also launched the Rashtriya Jal Jeevan Mission Kosh, where any individual, institution, corporation or philanthropist, be it in India or abroad, can contribute to help provide tap water connection in every rural household, school, Anganwadi, centre, ashram shala and other public institutions as well. Prime Minister also interacted with Gram Panchayats and village water and sanitation committees for improving awareness among stakeholders and for greater transparency and accountability of schemes under the mission. During the interaction, Prime Minister asked them how the problem of water shortage has been sorted and how people, especially women, have been benefited with Har Ghar Jal Yojana and Jal Jeevan Mission. Addressing the gathering, Prime Minister recalled that Gandhiji used to say that the real meaning of Gram Swaraj is to be full of self-confidence. ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना, पंच सरपंच चुनना इतना ही नहीं होता है। ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ
जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। Prime Minister said from independence till 2019, only 3 crore households in our country had access to tap water. Prime Minister noted that in just 2 years, more work has been done than was done in the last 7 decades. कम ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है? आखिर क्यों नहीं पानी इन लोगों तक पहुंचता? मैं समझता हूं जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें यह सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया, क्योंकि ये लोग जिन स्थानों पर रहे वहां पानी की इतनी दिक्कत उन्होंने देखी नहीं थी। ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी, इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्षण रही, लिटरेचर और बौद्धिक ज्ञान दिखाने का जरिया बन गई। इन लोगों में एक आदर्श गांव के प्रति मोह होना चाहिए था, लेकिन ये लोग गांव के अभावों को ही पसंद करते रहे। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं, जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी है। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। Prime Minister also praised the role of Gram Panchayats and Pani Samitis in the goal of providing water to every home. पानी का एक छोटा सा कुआं लोगों की प्यास बुझा सकता है, जबकि इतना बड़ा समुंदर ऐसा नहीं कर पाता। ये बात कितनी सही है। कई बार हम देखते हैं कि किसी का छोटा सा प्रयास बहुत से बड़े फैसलों से भी बड़ा होता है। आज पानी समिति पर भी यही बात लागू होती है और ये भी गर्व की बात है कि जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी हैं। Prime Minister also interacted with Gram Panchayat and Pani Samiti members from down south Tamil Nadu. Let's take a look. सुधा जी, अब आपके गांव में हर घर को नल से जल मिलने लगा है। पहले तो एक भी घर में नल कनेक्शन नहीं था। इसे माताओं बहनों का कष्ट जरूर कम हुआ होगा। आपका अनुभव क्या है? சுதா அவர்களே, இதற்கு முன்னர் உங்கள் கிராமத்தில் ஒரு வீட்டிலும் குழாய் தண்ணீர் இருக்க முடியாது. இப்போது அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் தண்ணீர் கிடைத்திருக்கிறது. இதன் மூலம் நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள்? மாண்புமிகு முதல்வர், மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கு வணக்கம். எங்கள் ஊரில் ஒரு தெருவுக்கு 2 குழாய் தான் இருக்கும். இப்ப வீட்டுக்கு வீட்டு குழாய் கொடுத்திருக்கோம் சார். ஐயா, அதனால மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके पहले हमारे गली को 2 नल ही रहता था। अभी जल जीवन मिशन से हमारे ग्राम के 412 घरों को नल के द्वारा पीने का पानी मिल रहा है। इससे हमें बहुत खुशी हुई जी। सुधा जी, मुझे कई वर्षों से मैं तमिलनाडु आता रहा हूं
वहाँ से लोगों से भी मिलता रहा हूँ और मुझे हमेशा तमिलनाडु के प्रति बड़ा गौरव रहा है। और मुझे पता है आपके गांव का सिल्क बड़ा मशहूर है, कुछ उसके बारे में बताइए ताकि देश वालों को पता चले कि हमारे यहाँ गांव में भी क्या ताकत है। सुधा जी बताइए जरा। சுதா அவர்களே, நான் அடிக்கடி தங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறேன். உங்கள் ஊரில் ஆரணிப்பட்டு மிகவும் பெருமையாக உள்ளது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இதை பற்றி தங்களின் கருத்து தெரிவிக்க முடியுமா? ஆமாங்க ஐயா, எங்க ஊரிலே வந்து 20 வீட்டுக்கு பட்டு செய்யும். ஆரணியிலே பட்டு தான் ஃபேமஸ். அதை ஏற்றுமதி உள்நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யுது சார். அதனால நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம். जी प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ इक्कास सिल्क आर्नी सिल्क बनता है, यह बहुत मशहूर है। हमारे गांव के 20% के लोग यह सिल्क बनाने में लगे हैं। आर्नी सिल्क विश्व मशहूर है। इस सिल्क को स्वदेश और विदेशों में भी निर्यात होता है। इसे हम बहुत खुशी हैं जी। And speaking on the occasion, Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat has talked about the Jal Jeevan Mission and Har Ghar Nal Yojana that is really benefiting rural India. देश में संपूर्ण स्वच्छता एवं हर घर नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में एक साथ आयोजित यह जल संवाद भी आज ऐसे ही शुभ संकल्पों और शुभ तिथियों का समागम है। साथियों, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज के इस संवाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन से हम सब इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति और एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। The nation pays homage to Mahatma Gandhi on the 152nd birth anniversary of the father of the nation. Gandhi Jayanti, as the occasion is known, coincides this year with the Azadi Ka Amrit Mahotsav, which was inaugurated on 12th of March this year by Prime Minister Narendra Modi on the 91st anniversary of a significant event in Gandhiji's life, that is the Dandi March. The march had a key role in furthering a spirit of pride and Atmanirbharta, that's self-reliance, among Indians. The day is also celebrated as International Day of Non-Violence every year to honor Mahatma Gandhi's path of ahimsa or non-violence during the Indian freedom struggle. Series of functions have been organized across the country and by Indian missions abroad on the occasion of Gandhi Jayanti. President Ramnath Kovind paid floral tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat in the national capital this morning on his 152nd birth anniversary. To Mahatma Gandhi, our beloved Bapu. कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे भणे नरसयो तेनु दर्शन करता भणे नरसयो तेनु दर्शन करता उड़े को तेरा आया रे वैष्णव जन तो तेन कही। Vice President M. Venkaiah Naidu also reached Rajghat today morning and paid tributes to Bapu on his birth anniversary. Offering floral tribute to our beloved Bapu. The 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi. गांधी जी अपने जीवन काल में Prime Minister Narendra Modi also paid rich floral tributes to the father of the nation at Rajghat in the national capital this morning. Minister of India, Shri Narendra Modi, offering floral tribute to the father of the
गांधी जी ने न सिर्फ भारतवासियों को एक नई राह दिखाई, बल्कि उनकी पूरी सोच को बदला। सत्य और अहिंसा के पथ का पालन बापू ने सदैव किया। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। Earlier in a tweet, Prime Minister said that Gandhiji's noble principles are globally relevant and they give strength to the millions. Moving on, Lok Sabha Speaker Om Birla also offered rich floral tributes to Mahatma Gandhi on his birth anniversary. श्री ओम बिरला जी, स्पीकर लोकसभा, बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री ओम बिरला जी, स्पीकर लोकसभा, बापू को श्रद्धा। And all religion prayer meeting was also organized at Rajghat to pay tributes to Mahatma Gandhi on his birth anniversary. वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। तुम पृथ्वी के नमक हो। सुम्मस्तवा इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समा। गणेशाय वक्रतुंड महाकाय गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते सूर्यदेवाय आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवा। Congress interim President Sonia Gandhi also paid floral tributes to Gandhiji on his birth anniversary at Rajghat this morning. Paying tribute to Bapu, Mahatma Gandhi's life and legacy is remembered by people across the world on his birth anniversary. इस उपलक्ष्य में सर्वधर्म Prayer meeting was also held at Sabarmati Ashram in Ahmedabad in Gujarat to observe the 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi. Sabarmati Ashram was Bapu's home where he stayed for several years before finally proceeding for a march to Dandi to break the salt law on 12th of March 1930. Tributes are also being paid to the father of nation Mahatma Gandhi in various states and union territories on his birth anniversary today. First up, Goa, with the state chief minister Pramod Sawant and union minister Shripad Naik paid rich tributes to Mahatma Gandhi at Gandhi Chowk in Panaji. Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel and Chief Minister Yogi Adityanath also paid tributes to Gandhiji in state capital Lucknow. Over in Bihar, Governor Phagu Chauhan and Chief Minister Nitish Kumar paid tributes to Mahatma Gandhi on his birth anniversary. And celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence, 10 cycle rallies were organized by the Indo-Tibetan Border Police. Starting from Independence Day on August 15, these rallies covered a distance of thousands of kilometers from remote areas of the country to pay homage to Father of Nation on his birth anniversary at Rajghat.
These rallies together covered a distance of 16,426 kilometers. Tributes were to the freedom fighters also by visiting the historical important places like memorials related to the freedom struggle en route by cycle rally. The United Nations Secretary General Antonio Guterres has also paid rich tributes to Mahatma Gandhi. In a tweet he said, and I quote, "Hatred, division and conflict have had their way. It is time to usher in a new era of peace, trust and tolerance. On this International Day of Non-Violence, Gandhi's birthday, let's heed his message of peace and commit to building a better future for all," unquote. Commerce and Industries Minister Piyush Goyal, who is in Dubai for the Dubai Expo 2020, also paid floral tributes to Mahatma Gandhi on his birth anniversary. The minister paid floral tributes to Mahatma Gandhi's statue at the Consulate General of India in Dubai. Piyush Goyal later briefed media in Dubai. He said India and the UAE are working together on various areas. He said that the two nations are supporting each other on clean energy. Minister also reiterated Prime Minister's vision to develop one world, one grid, which he said can be beneficial in curbing climate change. We are working together to support each other's vision for clean energy. We are working together to start manufacturing equipment for solar power, for batteries, and in the long run, as Prime Minister Shri Narendra Modi has articulated earlier, the vision is to have one world, one grid. And if we can create a worldwide grid, it will have a transformational impact on climate change. The Commerce and Industries Minister also inaugurated India's pavilion at the Expo yesterday and held meetings with the businessmen there. And he also added that these meetings were fruitful. He added that the businessmen showed interest in working with India in sectors ranging from gems and jewelry to food processing and tourism. Every one of them who met me spoke about gems and jewelries, wanting to do more on food processing. They want to be partners in our infrastructure development initiatives. They are very keen to look at the asset monetization program. They are extremely keen to partner with India on promoting tourism. And as India observes birth anniversary of Mahatma Gandhi, Indian embassies across the world also joined the nation to pay rich tributes to Bapu. Consulate General of India in Dubai, in a tweet, remembered Bapu on his 152nd birth anniversary. And the nation remembers independent India's second Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, on his 118th birth anniversary today as well. Lal Bahadur Shastri's slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, still etches in our minds, in the minds of the nation. He had his own way of connecting with common man, and his legacy is still celebrated by millions and millions of Indians. He promoted several revolutions, such as White and Green Revolution, which led to an increase in milk and food grain production. Lal Bahadur Shastri was deeply influenced by the political teachings of Mahatma Gandhi. President Ramnath Kovind paid floral tributes to Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat in New Delhi on his 118th birth anniversary.
Vice President M. Venkaiah Naidu also reached Vijayghat this morning and paid tributes to Shastriji on his birth anniversary. Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to Lal Bahadur Shastri Ji. Earlier in a tweet, Prime Minister said that his life based on values and principles will always remain a source of inspiration for countrymen. And Lok Sabha Speaker Om Birla also offered floral tributes to Shastri Ji on his birth anniversary today morning. And with that, it's time to wrap up this newscast. Meanwhile, news updates and special shows continue on your channel DD India. Stay tuned with us. Namaskar.